वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी रिविजनरी एक्सरसाइज जो सेमी सर्कल डब्ल्यू बेस से रिलेटेड थी। इसमें मैंने आपको एक एक फ्रेज के बारे में बताया था, हमने एक एक लाइन के बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम इस रिविजनरी एक्सरसाइज की डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस होंगे वो इकट्ठे बोले जाएंगे। तो डिक्टेशन शुरू की जा रही है। On Wednesday last, in the Memorial Hall workshop, Mr. Walter Wild of Wakefield delivered an extremely fascinating lecture on the empire. Full stop. He referred to the enormous size of the dominions, to the millions of people of various races living in them, and to the bewildering variety of animal life to be found in the area included in the empire. Full stop. He deplored frequent wars which had weakened British South Africa in the past and expressed his belief that the future would tell a very different story. Full stop. Mr. Wilde spoke in warm appreciation of the ever growing love between the dominions and the mother country, and declared that genuine affection was the best possible bond of union between us. Full stop. Subsequent speakers included Messrs. Hardwick, Shadwell, and Wagstaffy, and the audience accorded a warm expression of thanks to Mr. Wilde for his lecture. तो ये थी रिविजनरी एक्सरसाइज की डिक्टेशन। इसकी आपने 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। आपने एक एक चीज देखनी है, आपने देखना है आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक एक फ्रेज को चेक करना है, एक एक लाइन को चेक करना है, तभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।